Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapters form of matter, solid, liquids and gases. Here is some warm-up questions as you already read about these things so you can do it by yourself. Let's know about understand the different states of matter that is solid, liquid and gas. Know the uses of matter. Here is everything is around us is made of matter. Matter is anything that has mass and takes up space. Matter is made up of tiny particles. Mass is the quantity that tells us how heavy or light an object is. For example, scale, pencil, eraser are light in weight, whereas book, bag, stone are heavy. All objects take up space. For example, your favorite teddy or a car takes up space in the cupboard. Books take up space on the table and you occupy space on the chair. Scientists group matter based on its properties or characteristics, what it looks like and how it acts in different situations. Matter is everything that you can use, touch, feel or smell. Fire, light, heat are not matter. Matter can be invisible or so small that you cannot see. Most matter can be classified as solid, liquid और अ गैस. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा आपका जो मैटर होता है वो क्या होता है? मैटर जो होता है वो आपकी चीज जो आपका स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कोई मास होता है, दैट मीन्स वेट होता है. ओके स्टूडेंट्स, वो सब क्या होते हैं? आपके मैटर होते हैं. आप मैटर को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो वो सब क्या है बच्चा? आपके मैटर है. और हमारे आसपास जो भी है वो सब चीजें किससे बनी होती हैं बच्चा? मैटर से बनी होती है. ओके, और मैटर जो है वो 3 स्टेट में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज सॉलिड, liquid or a gas. Here is solid. Look at this picture. Solid have definite shape, have fixed volume, they cannot be compressed, they are rigid, their shape cannot be changed. So student, what is solid? Solid क्या होते हैं बच्चा? Definite shape होती है, उनका fixed volume होता है, बहुत rigid होते हैं और solid जो है compress नहीं होते हैं. Okay, here is an activity. Exploring the properties of solid materials, what you will need: a stone, cloth, paper, a table or chair, pen or any solids around you. So बच्चा, what you have to do, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करें. किस लिए? आपके सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए. हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? जैसे स्टोन, क्लॉथ, पेपर, टेबल, चेयर और बाकी जो सॉलिड आपके आसपास हो. ओके, हियर इज इंस्ट्रक्शन. व्हाट यू हैव टू डू: Walk in pairs. Use the question below to investigate each solid. Do it feel hard or soft? Does it make a sound when you knock on it? Does it break easily? Can it break? Can you put your finger through it? Is your hand dry or wet after handling the object? Does it change its shape when you put it in something else? How would you describe the shape? Is it fixed? Does it remain the same? So what you have to do, you have to take these objects. Student, आपको क्या करना है? इन सब ऑब्जेक्ट्स को लेना है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है कि क्या आपको हार्ड है, वो सॉफ्ट है, जब आप उन्हें नॉक करते हैं उनसे आवाज आई है, जब आपने उन्हें देखा, आपने उन्हें टच किया तो आपके हाथ जो है ड्राई थे या वेट थे, या फिर आपने और कोई चेंज उनमें देखा, उनकी शेप कैसी थी, फिक्स थी या चेंज हो सकती थी. तो ये सब क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं बच्चा? ऑब्जर्व करने हैं. यूज द टेबल गिवन ahead to fill in some of your answers about each of the object. There are some empty rows at the bottom for you to fill any other solid object that you might have investigated. That's what you have to. Here is a table. Look at this table, student. You have to fill your observation in this table. आपको अपने सारे जो observation है वो इस table में fill करने हैं. Okay, student. Now, questions. Which properties were the same, common for all the solids you investigated? वो ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी बच्चा जो आपने इन सब सॉलिड्स में कॉमन थी, वो आपने यहाँ पे आंसर करना है. लिस्ट सम अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट इन योर क्लासरूम, गिव एट लीस्ट 4 एग्जांपल. और आपके क्लासरूम में और कितनी ऐसी ऑब्जेक्ट है बच्चा जो सॉलिड है? आपको एटलीस्ट 4 एग्जांपल यहाँ पर लिखने हैं. Here is liquids. Liquids do not have definite shape. Liquids have fixed volume. They can be compressed. They take up the shape of the container. They can change its shape. They are fluid and this can flow like water. So बच्चे, आपके जो liquids हैं उनकी कोई definite shape नहीं होती है, fixed volume भी नहीं होता है और वो compressed हो सकते हैं.
वो किसी भी कंटेनर की शेप जो है कर लेते हैं, दैट मीन्स वो अपनी शेप चेंज करते हैं, वो फ्लूइड होते हैं इसलिए वाटर की तरह फ्लो करते हैं। हियर इज एन एक्टिविटी 2, यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। हियर इज guess. Gases neither have definite shape nor have fixed volume. They can compress much. They also flow and take the shape of their container. They always fill up the whole space of the container and will escape if the container is open. Students, जो आपकी गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। आपकी गैस का ना कोई फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वो आप जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं उसकी शेप को जो है वो क्या कर लेती है बच्चा, ले लेती है, वो फ्लो भी करती है, गैस फ्लो करती है आपकी। और आपका जो कंटेनर है अगर वो फुल्ली फिल्ड है और आपका कंटेनर ओपन हो जाएगा तो आपकी गैस क्या करेगी बच्चा, कंटेनर से बाहर निकल जाएगी। ओके, डू यू नो, even when it looks like the water inside a glass is still the water particle are constantly moving. That means अगर आप किसी ग्लास में पानी ले रहे हो और आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको लगता है कि देयर इज ओनली वाटर, बट नहीं बच्चा, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो फिर भी मूव करते रहते हैं। ओके, लुक हियर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स of where gas is being used. Look at this first picture, cooking gas stove. The gas is in cylinder and is used to cook food. So this is a gas stove, or we use gas stove for making food. Look at this picture. A patient in hospital with an oxygen mask on. The oxygen gas is given to her in a tube attached to the mask. So बच्चे इसमें क्या हो रहा है कि कोई पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चा, किसके थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू। ओके, here is, look at this picture. These balloons are filled with helium gas. You cannot see the gas if there, as the balloons are blown up and floating. So बच्चे ये balloons क्या करें, blown up and floating करें, किसकी हेल्प से, हीलियम गैस की हेल्प से, क्योंकि आपके जो balloons हैं उनमें हीलियम गैस जो है वो filled है बच्चा। Look at this picture. A scuba diver with an oxygen tank on his back to breathe under the water. तो बच्चा जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनकी जो बैक होती है उस पे एक टैंक लगा होता है, ऑक्सीजन टैंक, इसलिए जब वो पानी के अंदर जाएं तो वो ब्रीथ कर सके। ओके, here is we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is, look at this table, states of matter: solid, liquid, gases. In solid, particles are packed very closely to each other. In liquid, particles are not very closely packed. Particles are very loose packed. That means बच्चा जो solid के particles होते हैं वो बहुत पास होते हैं, आपके जो liquid के particles होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के जो particles होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। Here is usually hard and have a fixed shape. जो आपके solid होते हैं वो hard होते हैं and fixed shape होती है. In liquids have no fixed shape and can flow. They take the shape of the container they are poured into. That means जो आपके लिक्विड बच्चा होते हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। Have no fixed shape, then occupy all the available space in the container. So इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है गैसेस में भी, और वो जो आपके कंटेनर में जो भी स्पेस होता है बच्चे वो उसको फिल कर लेती है। Here is, on applying force, some solids can change their shape. So बच्चा अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके जो सॉलिड्स हैं वो अपनी शेप चेंज कर दे, कुछ एक सॉलिड्स, और some solid can be bent or broken. कुछ एक solids या तो मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। Liquids are also called fluids as it can flow from one place to another. और liquids क्या होते हैं बच्चा, fluids होते हैं क्योंकि वो एक से दूसरे प्लेस पे फ्लो कर सकते हैं। Gases are also fluids, और gases भी क्या होती है बच्चा, fluids होती है। Okay, here is uses of matter in our daily life. Different solids have particular properties such as stretch, strength or hardness that make them useful for different purposes. So बच्चे आपके जो different solid हैं वो बहुत different properties होती है, जैसे stretch होता है, strength होती है, hardness होती है, और उनकी हर एक property उनको useful बनाती है different purposes के लिए। For example, wood is used to make houses and furniture. Plastic are used to make many useful things such as toys, pens, parts of mobiles and computer, cars, etc. So जो आपकी प्लास्टिक है बच्चा वो किसके लिए यूज होती है, टॉयज वगैरह जो आपके बनते हैं उन सब में प्लास्टिक यूज होती है। Metals are used to make objects, utensils, houses, cars, aeroplanes, etc. So जो आपके metals हैं बच्चा उनसे हम ब्रिज बनाते हैं, घर बनाते हैं, aeroplanes बनाते हैं। Okay, these are also solid ना। Glass is obtained from sand and is used to make bottles, serving dishes, window panes and screens of computer and television, etc.
जो बच्चा ग्लास है वो हमें किससे मिलता है? सैंड से मिलता है, और उससे हम बॉटल्स बनाते हैं, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन बनती है, टेलीविजन बनते हैं। हियर इज coal is used as fuel. So coal को हम कैसे यूज करते हैं बच्चा? as a fuel. Okay students, rubber is used to make tires for car and bicycles. जो आपकी रबर है उससे हम क्या बनाते हैं बच्चा? कार के जो टायर्स होते हैं, बाइसिकल्स के टायर. Here is leather is used to make shoes and bags. Fibers are used to make clothes. leather जो है हम shoes और बैग बनाने के लिए यूज करते हैं, और फाइबर हम कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं. Liquids like water are the most important content of the human body. It is used for drinking, cooking, bathing and washing clothes. So जो liquid है बच्चा आपका, water सबसे important content है human body का, उसे हम drinking, cooking, bathing, washing इन सब में use करते हैं. Here is petrol and diesel. Petrol and diesel are fuels used to run cars, buses, trains and trucks. Food items like milk, cooking oil, juices, soups are liquid. So बच्चे जो आपके food items है ये सब भी क्या, जैसे milk, cooking oil, ये सब क्या होते हैं बच्चा? liquid होते हैं. The air breathed in contain oxygen which is important for us. Plant use carbon dioxide for making food for the entire world. जिस एयर में बच्चा हम ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं. किसके लिए? एंटायर वर्ल्ड के लिए. Here is cooking gas, that is LPG, is used for the kitchen as fuel. So cooking gas क्या होती है बच्चा? LPG, that is liquid petroleum gas, और हम उसे अपनी किचन में यूज करते हैं as a fuel. That is also liquid. Oxygen cylinders are used by the patients in hospital. और ऑक्सीजन सिलेंडर किसके द्वारा यूज किए जाते हैं बच्चा? जो पेशेंट होते हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए हॉस्पिटल्स में. Here is different forms of matter. Matter can change state with a change in temperature. These changes are often reversible. In other words, you can get back what you started with. That means जो matter है बच्चा वो अपनी state change करते हैं with temperature. Okay? मतलब जैसे जैसे आप temperature increase या decrease करेंगे तो आपके matter की state जो है वो change हो जाती है और वो reversible होती है. Reversible meaning कि आपने जहां से start किया था आप वापस वहां जा सकते हैं. Okay? Look here. Here is a picture. Ice, liquid, gas. Solid to liquid, melting. Liquid to gas, boiling. Gas to liquid, condensing. Liquid to solid, freezing. So these are the processes we use to change the state of matter. Look here. Heating some solids will melt them, turning them into a liquid. Heating liquids will boil them, turning them into a gas. So जब आप किसी solid को heat करते हैं वो melt हो जाता है बच्चा, और वो किस में change हो जाता है? liquid में. और जब आप liquid को फिर से heat या boil करते हैं वो किस में change हो जाता है बच्चा? gas. Cooling liquid will freeze them, turning them into a solid. और जब हम liquid को freeze करते हैं वो किस में change हो जाते हैं? solid में. Cooling gases will condense them, turning them into a liquid. और जब हम gases को cool करते हैं वो किस में change होते हैं बच्चा? liquid में. Here is check and mate, as you already read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is matter is everything around us. Materials are matter used to make something. Materials क्या है? matter है जो जिससे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं. Solids are matter that has a fixed shape. Solid वो matter है जिनकी fixed shape होती है. Liquids are matter that run or flow, can be poured, take the shape of the container. जो liquid है बच्चा वो run कर सकता है, flow कर सकता है और किसी भी container की shape जो है वो ले लेता है. Okay, here is gases are mostly invisible and take the shape of container and spread out flow in space. जो आपकी gases हैं वो invisible होती हैं, आपकी container की shape को जो है ले लेते हैं और आपकी जो बाहर का जो space है उसमें flow कर देती हैं. A change of state is brought about by heating and cooling matter. और हम किसी भी matter की जो state change करते हैं या तो heating से करते हैं बच्चा या फिर cooling से. Adding heat to matter causes solids to change to liquid and liquid to change gases. बच्चे अगर हम हीट करते हैं मैटर को तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. Removing heat from matter causes gas to change to liquid and liquid to change to solid. Okay, student. Here is some keywords. Compressed, squeezed or pressed together. Fluid, liquid, oxygen mask. A mask placed over the nose and mouth and connected to a supply of oxygen. Used when the body is not able to gain enough oxygen by breathing air. For example, at high altitudes or because of medical condition.
तो बच्चे ऑक्सीजन मास्क क्या होता है, एक मास्क होता है जो आपकी नोज पे जो है रख दिया जाता है और आपके माउथ को कवर करता है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से वो कनेक्ट होता है और उससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है बच्चा। और वो हमें यूज कहाँ होता है, या तो हायर एल्टीट्यूड पे या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। हियर इज हीलियम, अ गैस लाइटर देन एयर। हीलियम क्या होती है बच्चा, एक गैस होती है जिसका जो वेट है वो किससे कम होता है, एयर से। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रिवर्सिबल, इट कैन बी चेंज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। सो रिवर्सिबल इज जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन में बच्चा दोबारा वापस आ जाए। Okay students, thank you students, we will meet again in the next chapter.